बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करूंगा फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। फेस वन, ट्रायल डन ऑन ग्रुप ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी कि वो ट्रायल होता है जो कि सेहतमंद इंसानों पे किया जाता है किसी भी दवाई की एफिकेसी और सेफ्टी देखने के लिए या उसके साइड इफेक्ट देखने के लिए। अच्छा, दूसरा जो होता है उसमें ऐसे लोगों को दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है सेफ्टी एफिकेसी चेक करने के लिए जिनको बीमारी होती है। तो फेज वन जो ट्रायल है वो ऐसे लोगों को दिया गया जो सेहतमंद थे, और फेज टू में ऐसे लोगों को दिया गया जिनको डिजीज थी। फेज थ्री जो है वो हजारों के हिसाब से लोगों को दिया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है उसकी एफिकेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, और फिर उसको चूंकि मैन्युफैक्चर करना होता है और मार्केट करना होता है, तो ये एक बड़ी स्टडी होती है। और इसको न्यू ये बेसिकली न्यू थेरेपी होती है, और इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर भी किया जाता है। एक होता है फेज फोर, पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। इसमें ड्रग जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई है, रेगुलेटरी अप्रूवल उसको मिल चुकी है, और मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ चुकी है। तो पोस्ट मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात कोई मेडिसिन जो है वो आपने मार्केट कर दी, और मार्केट करने के बाद उसके कुछ अरसे के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, स्टेप्स होते हैं रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स के। एक प्रोटोकॉल आप ड्रा करते हैं, रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशंस, उसके बाद रैंडमाइजेशन करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं और फॉलो अप होता है, और बाद में जो है उसका आउटकम भी देखते हैं। अच्छा, अगर डिजाइन ऑफ ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसमें क्या होता है, सेलेक्ट सूटेबल पॉपुलेशंस, जिसको हम रेफरेंस टारगेट भी कहते हैं या टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हैं। सेलेक्ट सूटेबल सैंपल्स, अब इसको एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं। अच्छा, रैंडमाइज क्या है, इसमें फिर दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। मैनिपुलेशंस एंड फॉलो अप, और उसके बाद जो है वो असेसमेंट की जाती है। प्रोटोकॉल में क्या चीजें होती हैं, रैशनल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, design of the study, selection of study and control groups, size of the sample and allocation of subjects in both groups, treatment to be applied when, where and how, standard of operations, ethics, patient consent, confidentiality, adverse events, documentations or procedures. About selecting references and experimental populations, reference, yeah, target populations. The population to which the finding of the trial, if found successful, are expected to be applicable drugs or vaccines.
एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशंस क्या है? एक्चुअल पॉपुलेशंस that participates in the experimental study derived from the reference populations has same characteristics as the reference populations, must give informed consent, should be qualified, are eligible for the trial. Effectiveness of drug in treating anemia. Subject should be anemic. Effectiveness of a vaccine against a disease. Subject should not be already immune. Randomizations. Out of the control trial procedure. Participants are allocated into study and control group, eliminates bias and allows comparatively. Both groups should be alike with regard to certain variables that might affect the outcome of the experiment. Manipulations are interventions, deliberate applications, or withdrawal or reduction of a suspected causal factors. It creates an independent variables, drugs, vaccines, new procedures whose effect is measured in final outcome, constituting the dependent variable, incidence of disease, survival time, control of event. Follow-up implies examinations of the experimental and control group subjects at defined interval of time in a standard manner with equal intensity under the same given circumstances, attritions, inevitable losses to follow up, death, migration, loss of interest. Assessment. Positive results. Reduced incidence or severity of disease, reduced cost to health service, appropriate outcome in the study. Negative results, increased severity or frequency of side effects, complication, death. Approach to analysis. Intention to treat. All patients analyzed in the group allocated to even did not take the treatment, follow protocol. Randomizations maintained. Statistical assumptions valid. Per protocol, only those who followed the protocol state in advance. Missing data and in ITT analysis. Last value carried forward. Last observations for missing observations assumes this is an unbiased estimate. Variability and time trend not considered. Maximum likelihood estimations. Mixed model approach. Predictor used to reflect a true relationship with the missing value. When data are largely missing at random, MLE is statistically valid. Advantage and disadvantage of RCT. Advantages: randomization tends to balance prognostic factors across study groups. Detailed information can be collected on baselines and subsequent characteristics of participants. Dose level can be predetermined by the investigator. Blinding of participants can reduce distortions in assessment of outcome. Disadvantage: subject exclusions may limit ability to generalize finding to other participants. A long period of time is often required to reach a conclusion. A large number of participants usually required. Financial costs are typically high. Ethical concerns may arise. Compliance. Bias in interventions, evaluations. Selection bias. Bias in patient selections.
confounding or imbalance in baseline progno- prognostic factors or allocation bias, Hawthorne effect, improved performance in interventions subjects due to psychological benefits that he or she is receiving some new treatment, observer bias, bias in outcome assessment may affect patient care. Those modifications are closer observations may report favorable outcome for new treatment. Allocation concealment refers to the stringent precautions taken to ensure that the group assignment of patients are not revealed prior to definitely allocating them to their respective groups. Prevent selections bias by concealing the allocation